Swayam Prabha. Digital India. Educated India. The winners of Smart India Hackathon have not only demonstrated exceptional technical prowess, but have also showcased an unwavering commitment to leveraging technology for the greater good of society. Today, we will meet a winning team which has done just that. Let's welcome Tanu Yadav and her team. Welcome, Taru. Welcome to the show. Please introduce your team to us and yourself as well. Sir, myself, Adnan, and he is Sujal Pandey and Sashid Van, and my one more team member, Nitishar. We four members have joined. We are from Team Swasthya, student of Bhilai Institute of Technology, Durg. Okay, great. I welcome you all of you to this show, and let's begin with trying to understand the problem that you were working on. What was your problem statement, and what exact problem was that which you worked upon? Sir, basically our problem statement was to design a robotic device for borewell rescue operation. सर रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही हम जहाँ रहते हैं दुर्ग में तो चापा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चा 8 इंच के बोरवेल में फंस गया था जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लाइक कलेक्टर से लेके एसडीएम सभी लोग परेशान थे और उसको बचाने के लिए उसी के पैरेलल एक गड्ढा खोद करके जिसमें मैन पावर इकोनॉमी सभी चीज का लॉस होता है इवन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके यूज से लाइक बच्चे को रेस्क्यू करते थे उसमें भी कंप्लीट इंश्योरिटी नहीं थी कि बच्चा लिविंग कंडीशन पे रेस्क्यू हो सकता है इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हमने लाइक टैकल करने के लिए अपना रोबोटिक डिवाइस डिजाइन करा था राइट तरु ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखा है इवन इन द पास्ट काफ़ी सारे हुए हैं दीज आर वेरी ट्रैजिक वंस एंड आई मीन what a person goes through when he is like inside that deep borewell is kind of very shocking to even imagine. So ये सचमुच एक बहुत क्रिटिकल एरिया है जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है. So it's wonderful to know कि आप लोगों ने इस पे काम किया है. So let us get to know about your work and what exactly have you come up with, what innovation have you come up with in this particular case. Before starting any project, the first question arises is about the challenges. If you could see in this like pie chart graph which we have attached, there are the reasons which basically includes the cases like which involve borewell operation. Like first it was like basically what happens a child age of around 4 to 8 years while playing they fell into the borewell. Some cases of like uncovered borewells. There was basically four requirement of a problem statement. First was to design a device equipped with camera and sensor to provide real-time data. Second was to specialized tool that can be used to extract the individual. And third, it should be remotely controlled, like basically robotics. And fourth was lightweight and compact. So it was the basic requirement of our problem statement. If we look at about the significance, if you could see in this pie chart, it shows the diagram of number of cases state-wise which include of borewell rescue operation in past years. So we think about its significance. It includes basically 3 points. First is to design and rescue children with ease and comfort. Like the ease and comfort are the basic thing which involve while like rescue of children from borewell. Second, it should timely retrieval. Like the current scenario involves like to digging of a parallel well with that bore well to rescue the children, which is kind of time taking process. In comparison to that, the device which we have designed, it ensures the rescue of children within less time span. And third, it involves specialized equipment and skill in confined space. Like if you two have also knowledge about the borewell of around like 8 inches, which is very a small gap to rescue children from that. So our basic requirement was to design something which should be of like small dia, which could easily go inside the borewell for the rescue of children. See in the next slide, there are two basic things. First is the target user and second is use case. Target user are the person who are going to use my device. So the main people who can use our device are the NDRF rescue operation team, and use case basically involve the children aged between 4 to 8 years. Existing solution involves the excavation process like digging of the well in parallel to that bore well. The main thing is about the solution concept which we have applied in our device. So this slide basically includes the solution which we have implemented in our device.
Basically, we have divided our whole mechanism into four portions. First, it was the monitoring stage, which includes camera and sensor. In camera, we have specifically used ESP32 cam, which has inbuilt flashlights, and NQ2 sensors for detecting any harmful gas present inside the gas. Robotic arms is the middle portion of our device, which is like while elevating inside the borewell, it is going to hold the child around its chest to make displacement so that the device lower portion could go inside the borewell. Basically, we are going to use aluminum alloy to make that robotic arms, and its strength is it could hold around 50% of child's weight. Third stage was the elevation process. In that, we have used rack and pinion method for like making it less height constant so that it should not be of like particular height. And the fourth is the base opening process. Base opening was the like last portion as our device lower portion comes in base of the child. Our base opens and it as the child settle down on the base, device starts elevating. We are proposed the idea of using aluminum alloy in the base, which could bear the weight around 10 to 25 kgs. And it was the like 3D model of our device which we have made to showcase our prototype specification. You could see in this also all the inbuilt things which we have shown here: ESP32 cam, gas sensors, metal clamp of that robotic arms, and rack and pinion, and then base portion. Our main three value proposition of our device was our mechanism was simple, it is cost effective, and it ensures the complete security of the child. So this device certainly looks wonderful. It has whole host of new features which can definitely be very useful and effective. So Taru and team, can you show us the prototype that you have created over there so that we can physically see कि exactly ये कैसा है और कैसे काम करने वाला है ये. Sir, this is the prototype which we have made. In upper portion, we have like this gas sensors and ESP32 cam. This is our robotic arms and rack and pinion method for elevation, and it is the base, and it's been remotely controlled from outside. Okay, Taru, this device looks really, very workable and very handy. So tell me one thing, is there a method in which you can communicate to the child, because ये जब डिवाइस नीचे जाता है तो वो बच्चा इसके साथ क्या करने वाला है, उसको कैसे अडेप्ट करने वाला है, उसको कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली जब बच्चा बोरवेल के अंदर गिर जाएगा, वो या फिर कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। अगर वो बच्चा कॉन्शियस है तो हम स्पीकर के और माइक्रोफोन के थ्रू से कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि वो काम डाउन रहे बच्चा, वो ज़्यादा बोरवेल में मूव ना करे, नहीं तो उसकी पोजीशन और पुअर हो सकती है, वो और अंदर जा सकता है। और अगर बच्चा कॉन्शियस या अनकॉन्शियस किसी भी कंडीशन में, तो ये जब बोरवेल हमारी नीचे जाएगी, बोरवेल के अंदर ये मशीन, तो फर्स्ट ये पार्ट जाएगा अपना बेस वाला पार्ट। वो बेस वाला पार्ट ऐसे अंदर जाएगा और ये बच्चे के पैर के नीचे रहेगा, और इस आर्म के थ्रू हम उस बच्चे के चेस्ट के अराउंड ग्रैब कर सकते हैं ताकि मशीन उस बच्चे को होल्ड कर ले, ताकि वो बच्चा और नीचे ना जा पाए। फिर एक बार ये आर्म बच्चे के चेस्ट के अराउंड ग्रैब हो जाएगा, फिर हम इस बेस के थ्रू उस बच्चे के पैर के नीचे अटैच कर देंगे, जिससे बच्चा इस बेस पे खड़ा हो सके। तो बच्चे का सारा वेट इस बेस पे आएगा, एंड फिर हम इस मशीन के थ्रू उसको वापस ऊपर खींच सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो ये सच में काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहे हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर डिवाइस। लुक्स ग्रेट। सो अभी अगली चीज़ जो दिमाग में आ रही है, इसके डिज़ाइन को लेके, जिस तरह से आपने पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि वो अंदर कैसे जा रहा है, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स किस टाइम पे किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ थॉट मस्ट हैव गॉन बिहाइंड डिज़ाइनिंग दिस एंटायर थिंग। So, let us know something more about, how you went on designing this particular gadget, and what all was there in your mind while you were, designing this. बच्चे का जो शरीर का जो डायमेंशन रहता है वो फ्रंट टू बैक और चेस्ट के अराउंड इक्वल नहीं रहता, जिससे मतलब हमको एक गैप मिल जाता है। तो हम लोग हमारा डिवाइस ऐसा बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर गैप पे वो फिल हो सके, वहां से मतलब अंदर जा सके, जो बेस वाला रहेगा, और चेस्ट के अराउंड जो आर्म्स रहेंगे उसको होल्ड करके, और बेस नीचे ओपन होके मतलब सिंक पे काम करते हुए वो ऊपर खींचेगा।
सो डिज़ाइन पे अभी कुछ काम किया जाना बाकी है, या आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है, जब इसको आप एक रिफाइंड मैनर में प्रोड्यूस करेंगे, सो दिस विल बी गुड इनफ टू ऑपरेट एंड डू द डिजायर्ड वर्क? यस सर, बेसिक जो डिजाइन रहा है वो सेम रहेगा। हमको बस ये जो मटेरियल ही रहेंगे उसको रिफाइंड वे पे बनाना पड़ेगा जो डिवाइस है। बाकी डिजाइन परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं। Okay, wonderful. So Taru and team, it was very nice talking to you guys. ये जो आपने एक क्रिएशन जो दिया है हमको, this actually is looking very promising. और ये जो बहुत गजब सी समस्या हमारे देश में आ जाती है, और अक्सर कुछ महीनों में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है, तो आई एम श्योर ये सब इंसिडेंट्स बड़े इजीली रिजॉल्व कर दिए जाया करेंगे आफ्टर दे स्टार्ट यूजिंग योर डिवाइस. सो आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि इस डिवाइस को हम जल्द से जल्द मार्केट में ला सकें, प्रोड्यूस करना शुरू कर सकें, और NDRF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, वैसे व्यक्तियों को इन डिवाइसेस के साथ लैस कर सकें. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड वन डे आई एम श्योर द नेशन विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस पर्टिकुलर इनोवेशन. Thank you so much for joining us, and all the best for your future in this sphere. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। This team's commitment to social responsibility, combined with the technical acumen, exemplifies the spirit of Smart India Hackathon and the broader ethos of innovation for the betterment of humanity. We will meet more such brilliant minds in the coming editions. Keep watching this space.